वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। आज हमारे साथ दीपक है, जो कि उबर में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, सिंस 2009 हमने साथ में अंडरग्रेड की थी आईआईटी खड़गपुर में। साथ में हम विंगमेट्स थे, तो बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है एंड हम पर्सनली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम पर्सनल लाइफ के बारे में। लेकिन मुझे कम नॉलेज है अबाउट उसकी करियर एंड उसने क्या डिसीजंस लिए थे। आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे एंड होपफुली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल folks who want to be great software engineers in Indian big tech. So maybe welcome Hammer to थोड़ा सा small intro दे सकता है कि how did you get to IIT and what was your journey like? Thanks, Sajal, for having me. So basically, you anyway know most of it, but I started my schooling in Dehradun. So basically, my father was posted in Dehradun, so most of my schooling career has been there. And school was mostly about getting good marks with barely any knowledge के क्या करेंगे उस अच्छे मार्क्स का। उसके बाद आई बिलोंग टू यूपी, तो घर वालों को लगा पढ़ने में ठीक ठाक है, तो इट वाज मोस्ट तो सबने शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा हो गया यूपीएससी करेगा। अच्छा। बट हाँ, वहाँ से थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा आया। उसके बाद पहले इंटरेस्ट इंटरनेट तो होता नहीं था, तो मोस्टली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नेबर्स एंड आसपास में लोग क्या कर रहे हैं। हम्म। तो वहाँ से फिर पता चला कि हाँ, सम नेबर के रिलेटिव्स आर इन बैंगलोर डूइंग गुड इन देयर करियर। तो वहां से थोड़ा सा आया कि हाँ, इंजीनियरिंग करनी है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। राइट। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। जैसे लेकिन देहरादून में मैं भी में था, तो वहां पे आईआईटी इतना बड़ा तो नहीं था, इतनी ज्यादा मतलब कंपटीशन जो जेई प्रेप होती है वो इतनी ज्यादा नहीं थी। मोस्टली इट राइट। वाज कि फ्रेंड्स, कोई ऐसे होता है कि एक जना चला गया फैमिली में, ऐसे कुछ हुआ था कि उससे पता चला अच्छा हाँ आईआईटी करना है। मुझसे ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मिलते थे। और कुछ भी हो देहरादून में, इट वाज अ लॉट, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रेज अबाउट स्टडीज। कोई भी आगे निकलता था तो एवरीबडी यूज्ड हम्म। टू टॉक अबाउट इट, उनका न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है। दोज थिंग्स फैसिनेटेड के एंड इट बिकम्स एन एस्पिरेशन, ये सब देख के कि अच्छा ठीक है, हम भी ये करेंगे तो हमारा भी नाम होगा आगे जाके। हाँ तो हाँ। वहां से लेकिन तुझे मोस्टली उस टाइम लगा था कि आईआईटी के बाद यूपीएससी करना है, या वो ओपन माइंडेड था कि कुछ भी देख लेंगे जाके? एटलीस्ट जब तक मैंने ज्वाइन किया था तब तक मेरे दिमाग में था कि आगे जाके यूपीएससी ही करना है। प्रोबेबली अच्छा। वन ऑफ द रीजन कि आई वांटेड टू बी इन कोर टेक, नॉट इन सीएस। अच्छा। बट हाँ। तो अच्छा, इसलिए कोर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करी फिर अंडरग्रेड में। तो फिर वो कब चेंज हुआ कि नहीं जॉब भी कर सकते हैं? इवेंचुअली आईआईटी चले गए थे यही सोच के कि हाँ, आगे यूपीएससी करेंगे 3-4 साल हम्म। पढ़ के। बट फिर पता चला कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू परस्यू। ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे तो श्योर शॉट पहुंच जाओगे। हम्म। और बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, ऐसा लग रहा था कि ठीक है, देर शुड बी समथिंग इन हैंड, देर शुड बी अ बैकअप। क्योंकि यूपीएससी के साथ ऐसा है, यू विल गिव 4 इयर्स 6 इयर्स एंड आफ्टर दैट अगर नहीं हुआ तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे हम्म। एक पॉसिबिलिटी होती है कि चलो एक सेफ्टी जोन है, मे बी इफ यू आर नॉट इन अ वेरी गुड कंपनी, एटलीस्ट यू विल डू समथिंग गुड विद योर करियर एंड विद हार्ड हम्म। वर्क यू कैन ग्रो देयर। ये ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया। एंड हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था, तो आना टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। बट स्टिल आई फील इट वाज अ रोड मोर ट्रैवल्ड देन द यूपीएससी। तो लग रहा था कि सिंपलर पाथ हो सकता है एंड इट विल बी हाँ, अ गुड सेफ ऑप्शन कि कोर करेक्ट करेक्ट। इंजीनियरिंग टेक जॉब करेंगे तो एटलीस्ट पैसे आते रहेंगे। तो लेकिन ये कैसे हुआ था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, ये कब कौन से ईयर में डिसाइड किया था तूने? तो गया था एकदम विद द फ्रेम ऑफ माइंड के आगे जाके हाँ ओके, मशीन्स ही बनानी है। मेरा हाँ। एस्पिरेशन था मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो वही करना है आगे जाके। एंड मेरी थर्ड ईयर इंटर्नशिप भी थी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में। दैट वाज अ कंपनी विच मेक्स इलेक्ट्रिकल केबल्स। अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस था, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, ऑल दूज मशीन्स। एंड छोटा सा प्रोजेक्ट भी किया था जिसमें उनके लिए कुछ ऑटोमेशन मशीन भी बनाई थी।
फिर बाद में टिल थर्ड ईयर आई वाज कंप्लीटली आई हैव टू गो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ। फिर फोर्थ ईयर में जब आया तो मेरा एक प्रोफेसर थे, and from there I got my BTech project which was related to SolidWorks, which is like a AutoCAD software. It involved a lot of coding. तो वहाँ स्कूल में थोड़ा बहुत कोडिंग किया था, एंड उस प्रोजेक्ट में मुझे काफ़ी कोडिंग करनी पड़ी। हम्म। एंड फिफ्थ ईयर प्रोजेक्ट में मेरा ड्यूअल डिग्री कोर्स था, तो फिफ्थ ईयर प्रोजेक्ट में भी मेरा डेटा एनालिसिस पे था। इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कोडिंग। तो वहां से लगा, since everything is involving a lot of coding, and by that time I felt कि okay, as compared to mechanical engineering my stronger suit is coding, so why not हाँ। pursue that? And mechanical engineering is also not an easy thing to do. You have to devote a lot of time to learn things. राइट। तो हाँ, वहां से लगा कि ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑल्सो माई सॉफ्ट स्किल्स वर नॉट रियली गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, especially coming from a school where there was not too much of English speaking culture. हम्म। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टू कम अप इन ऑन somewhere जहाँ पे everybody is more, I would say, extrovert than me, more public, having better public speaking skills than me. तो मूवीज वगैरह में देखा था कि कोडर्स आर मोस्टली लाइक ओके, अपना कोड किया, अपना काम किया, एंड दैट्स इट। दो इट्स हाँ। नॉट ट्रू, वी नो दैट। बट हाँ, वहां से लगा कि अच्छा, शायद मेरे लिए कोडिंग वुड बी इजियर थिंग टू डू। तो वहां अच्छा। से भी एक इंस्पिरेशन था कि ओके, प्रोबेबली इट वुड बी, इट इज मेंट फॉर मी, लाइक आई वुड डू बेटर इन कोडिंग एज compared टू being in operations or some sales kind of job. अच्छा, तो अ, तुझे लग रहा था कि स्किल सेट जो है तेरा कोडिंग की तरफ ज्यादा है, फ्रॉम द हाँ, एक्सपीरियंस जो प्रोजेक्ट्स में आ रहा था, एंड इवन द करेक्ट करेक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है उसमें कोडिंग हैवी होने से तुझे बेटर फील हो रहा था, रिजल्ट्स भी दिखते हाँ हैं आई थिंक कोडिंग में इमिडिएटली कि ये कोड हो गया। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर उस टाइम तूने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब में जाना है, क्योंकि एक और ऑप्शन होता है कि मैकेनिकल या कोर टेक जॉब है, LNT टाइप, वहां पे भी कोडिंग तो चाहिए होगी, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में भी तो कोड चाहिए ही होता है। या हाँ, वो था कि प्लेसमेंट्स में बैठेंगे देखेंगे कौन सी कंपनी में हो जाता है। काइंड ऑफ प्लेसमेंट में तो हाँ, मैं मोस्टली जिसमें भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं बैठा था। बट हम्म। समवेयर अंदर से वो पहले से फीलिंग थी कि इस एरिया में जाना है। तो इवन बिफोर इंटरव्यूज जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एवरीबडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर, कोई कोडिंग है, कोई अलग टाइप की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, हम्म। कोई इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। तो मेरा था, तो मैंने अराउंड फिफ्थ ईयर टुवर्ड्स फाइनल ईयर मैंने शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा कोडिंग प्रैक्टिस करना, कि एटलीस्ट हम्म। इंटरव्यू तो मतलब जाना इसी साइड जाता था। अगर कहीं और होता तो आई डोंट नो हाउ इट वुड हैव शेप्ड, बट ठीक है, चलो, फॉर्चुनेटली एवरीथिंग वर्कड आउट द वे आई वांटेड। हम्म। तो उस टाइम आई थिंक अपना एक बार करियर पाथ बता कि कैसे, कौन सी फर्स्ट कंपनी थी एंड फिर वहां से आगे कैसे बढ़ा, कब सोचा कि अच्छा चेंज कर लेना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट कंपनी CXC नेटवर्क थी। इट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट। हम्म। लाइक हाँ, काफ़ी इंटरव्यूज में बैठ चुका था उससे पहले भी, नॉन कोडिंग एंड एक दो कोडिंग भी। एंड तो इंटरव्यूज में मोस्टली इट वाज पजल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाँ। इंटरव्यू हुआ, एंड उसके बाद आई वाज नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा। तो जब सारे इंटरव्यूज वगैरह रैप्ड अप हो गए, इंटरव्यूअर्स बाहर आए, आई आस्क्ड देम कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हम्म। दे जस्ट टोल्ड मी दैट वी वांट पीपल हु कैन कोड, दैट्स इट। अच्छा हाँ। ठीक है, ओके। इट फेल्ट लाइक सरकाज़म बट इट वाजंट। तो बाद में पता चला दे एक्चुअली सिलेक्टेड मी फॉर दैट हम्म। जॉब। तो वहां से एक स्टेपिंग स्टोन मिल गया था मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एंड आई फेल्ट दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, गेटिंग इनटू दैट। Like हम्म। once I'm in software engineering, it has always been relatively easier than that first step where I had to get into software engineering. राइट। तो एक बार CXC में चला गया, वहां पे फिर जाके पीपल आर यूजुअली वेरी हेल्पफुल। एंड उस बहुत छोटी सी कंपनी थी, इट हैड 25-26 डेवलपर्स एंड फ्यू टेस्टिंग। सो इट वाज अ कंपनी विच हैज अ सर्विस पार्ट विच वाज डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर अदर कंपनीज, एंड दे हैड डेवलप्ड एन इन हाउस प्रोडक्ट। सो आई वाज हम्म। वर्किंग ऑन दैट।
तो वहाँ पे बाकी सारे लोग देवर लाइक 8 years 9 years सीनियर्स टू मी, तो बहुत इजी था कि किसी के पास जाके पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बता देते थे। तो अच्छा। ठीक है, चलता रहा अराउंड एक 1 year तक। इट वाज अ गुड लर्निंग कर्व, एंड आफ्टर दैट बिकॉज इट वाज अ स्मॉल कंपनी एंड दे हैड वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो बहुत डाइवर्स नहीं था उनका टेक स्टैक। तो हम्म। फिर लगा कि अच्छा ठीक है, शायद कुछ और करना चाहिए। फिर लोगों से बात करते हो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, यू हियर ऑल दोस टेक जार्गन्स, माइक्रो सर्विसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस, और उस टाइम बहुत ही डिफरेंट लगता था। ओके, आई एम जस्ट वर्किंग इन वन डेटाबेस, आई एम जस्ट हैविंग वन सर्विस, दैट्स इट, आई हैवंट वर्कड अ हम्म। लॉट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, कुछ और भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने हम्म। जॉब ढूंढना शुरू किया कि let's find something else, probably I'll see other things there. But as soon as I went to this interview process, I realized that it's not that easy, this interview thing. Since ओके। college में तो ठीक है, puzzles के basis पे हो गया, here people actually ask you coding, low level design, at least at that level. Then I had to get back to the books, Introduction to Algorithm by Corman, I think. So I हाँ। started reading that, and उसके बाद भी, हाँ, I was around halfway into that book and I realized it shouldn't be that tough, क्योंकि हाँ। उस काफी ज्यादा डिटेल्स हैं। फिर पूछा लोगों से कि हाँ कैसे करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन गॉट टू नो दीज वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड के, वहाँ पे लोग हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर उसमें प्रैक्टिस करना शुरू किया, ऐसे करके फाइनली आई लैंडेड इनटू माय सेकंड जॉब। But this whole interview process has always been really helpful in learning new things, be it हम्म। coding, be it designing. ऐसे हेल्थ कार्ट में लैंड किया, which was my second company कार्ट में। इसमें फॉर हेल्थ कार्ड के इंटरव्यूज में सिर्फ कोडिंग पूछा, टाइम भी पूछा था, सो जैसे डिजाइन के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी उस टाइम? So it was, they properly asked me a low level design question, and I हम्म। had actually no idea what to do. हम्म। So he had to help me a lot. Okay, so he asked me at that point of time, design an ATM machine. So अच्छा। I did not know exactly how to go about that question. It was just a surprise for me. हाँ। So I don't know what exactly to do. So I took that time there was no work from home or online interviews. So I took the हम्म। marker, went to the board, started designing boxes. Okay, then he kept asking me question and okay, how these things will interact. What do you expect from this component? And I kept answering them like whatever हम्म। best I. And with that they felt okay, ठीक है, he can do. So that's how that, तो and आई I think थिंक that ये भी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जैसे डिजाइन इंटरव्यूज में यू हैव टू टेक द फीडबैक ऑफ द इंटरव्यूअर एंड रिएक्ट टू इट। इट्स नॉट कि तुम्हें परफेक्ट डिजाइन करना है, बट वो जब तुम्हें हिंट्स दे रहे हैं तो हाउ कैन यू अडेप्ट एंड मेक अ सिस्टम आउट ऑफ द हिंट्स दैट आर गिवन। yeah, that's तो very क्वालिटी important. भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये Hmm. था कोडिंग एंड डिजाइन। फिर हेल्थ कार्ड पहुंच गए, वहां पे लगा तुझे कि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, कि अब माइक्रो सर्विसेज बनानी पड़ेगी, वो सब आ गया उस जॉब में? नहीं, वो सब तो नहीं आया था। वो सब आई थिंक इंटरव्यू तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है, और फिर जब तुम जाते हो तब रियलिटी पता चलती है कि क्या है अंदर। बट स्टिल इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट कंपनी। काफी हम्म। नई चीजें थी, नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। बट ये था कि आई गॉट ओनरशिप ऑफ कंप्लीट मॉड्यूल्स, क्योंकि बहुत हम्म। छोटी सी टेक टीम थी एंड दे वर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग। लाइक वी हैव मसल ब्लेज प्रोटीन पाउडर का, उसकी 2-3 फैक्ट्रीज थी, and that whole ERP system, I was responsible for making that ERP system. तो अच्छा। मतलब एक बंदे को, एक रिसेंटली न्यू जो लाइक आई हैड 1.5 year एक्सपीरियंस, उसको तुमने पूरा हम्म। कॉम्पोनेंट दे दिया तो इट इज बाउंड कि वो बंदा सीखेगा ही सीखेगा। हाँ। हाँ। कुछ राइट। भी मे बी नहीं है वो सब हाई लेवल टेक चीजें नहीं है, बट फिर भी कंसिडरिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गेट, उससे ही तुम एक चीज सीख जाते हो कि ओके, हाउ टू कैरी आउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू हैंडल दैट हम्म। प्रेशर, हाउ टू मीट डेडलाइन। सो हाँ, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। ओके। एंड इट वाज अराउंड 1 year 5 months आई वाज देयर। हम्म। तो वहाँ पे नॉट जस्ट कोडिंग स्किल्स की बूटस्ट्रैप करना एक सिस्टम, बट आल्सो की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्किंग विद अदर्स, टेकिंग हेल्प, ये सब एग्जैक्टली। सॉफ्ट स्किल्स भी बनने स्टार्ट हो गए। तो फिर वहां से इतनी जल्दी मूव क्यों किया उसके बाद पेटीएम में?
हाँ, तो आई थिंक इट वाज 1 ईयर 5 मंथ्स एंड आई फेल्ट के काफ़ी कल्चरल चेंजेस आ रहे थे कंपनी में। अच्छा। तो it became more like a maintenance thing. मतलब they were not thinking of, meaning their main focus was growing their online store because that's where the business was coming for health card. हम्म। तो हम्म। थोड़ा सा टेक साइड लाइन ले लिया था हेल्थ कार्ट में। तो इसलिए अच्छा। इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी कि तुम्हें नई चीज़ें लानी है, तुम्हें स्केल बढ़ानी है, क्योंकि दे हैड आई थिंक 25 ऑफलाइन स्टोर्स एंड ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा नहीं था हेल्थ कार्ट का उस टाइम। ओके। तो फिर लगा कि ठीक है, जो चीज़ें सीखनी है, जो स्केल देखना है एक्चुअली, तो वो यहाँ पे अब और नहीं मिल पाएगा, इसलिए डिसाइड कर लिया। एंड आई एम हैप्पी कि वो डिसीजन जल्दी ले लिया कि ठीक है अभी हम्म। ये मेंटेनेंस में थोड़ा जा रहा है, जल्दी डिसीजन लिया एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट। फ्रॉम देयर आई लैंडेड इन पेटीएम। तो ओके। तो वो भी सैलरी भी एक मोटिवेशन होती है उस टाइम कि, या फिर इट्स जस्ट प्योरली लर्निंग कि अभी सीखना है मुझे, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की मैं चले जाऊंगा? हाँ, आई थिंक टिल पेटीएम मतलब मनी वॉज नॉट अ फैक्टर कि ओके पैसे के लिए मुझे चेंज करना है। आई हम्म। वॉज वेरी बैड एट नेगोशिएशन ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पता भी नहीं होता अच्छा। था कि कैसे पैसे मांगने हैं, क्या बोलना है इंटरव्यू एचआर को। तो इट वॉज मोर लाइक हम्म। हाँ ठीक है, जो मिल गया तो ठीक है, लर्निंग के लिए तुम क्या दे रहे हो दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। तो फिर पेटीएम में व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, एंड कैसे ज्वाइन किया? फिर से वही इंटरव्यू प्रेप, या इट वाज डिफरेंट दिस टाइम? एवरी टाइम इंटरव्यू प्रेप इज मस्ट इन टेक आई वुड से, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते ही हैं टू अच्छा। गेट योर सेल्फ रैम्ड अप। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो थोड़ा इंटरव्यू का लेवल भी चेंज होता रहता है। एंड हम्म। कंसिडरिंग मैंने जैसे कंपनीज में अब पेटीएम का इंटरव्यू लेवल थोड़ा सा लाइक इट वाज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू हेल्थ कार्ड, सिंस हेल्थ हम्म। कार्ड वाज इन मेंटेनेंस मोड एंड मोस्टली they were looking for people, meaning till the time at least when I was leaving health card, it was more like they were hiring freshers from colleges and they stopped hiring any experienced folks. हम्म। And well, so I used to take interviews of those freshers, and now when I was giving interview, it was for experienced folks. So it was a lot different from I was what I was taking or what I was used to previously. राइट। तो उसके लिए भी फिर से थोड़ा सा डिजाइन पढ़ना पड़ा, हाई लेवल डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, और what हम्म। are microservices, what is load balancer, these small things which probably I did not know till then. So this interviewing experience, this time gave me a lot of learning actually. हम्म। तो इंटरव्यूज इज आल्सो द टाइम की गो बैक टू द बेसिक्स एंड लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि जब हम जॉब कर रहे होते हैं इट्स अ डिफरेंट स्किल सेट जो तुम बना रहे होते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस। इतने कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीएस इतने यूज भी नहीं होते जनरली। एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे? कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी, एंड क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे वहां पे? That was really interesting. Actually, luckily I got a team which was really good and it was just starting. So I started in हम्म। Paytm Payments Bank. तो उस टाइम उसमें थोड़ा सा स्टार्टअप पेटीएम डेवलप हो गया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाज न्यू। इट हैड समथिंग लाइक 100 एम्प्लॉइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो ओके। थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर आ गया था। एंड मैं नया नया गया था, मुझे बोल दिया ये हमारी सर्विस है, इसके लिए पूरा माई सीक्वल सेटअप करना है, नॉट हाँ। टॉक टू डेवऑप्स, गेट दोज इंस्टेंसेस। ये सब चीज़ें नई थी मेरे लिए। तो हाँ, सब कुछ सीखा वहाँ पे। एंड इवेंचुअली और काफ़ी नई चीज़ें थी वहाँ पे एकदम। देवर लाइक हमें नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है, देवर लाइक हमें एकदम सब कुछ नया यूज़ करना है, नई टेक्नोलॉजी हम्म। यूज़ करनी। और जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज होती थी उस पर डिस्कशन होता था कि ओके वी वांट टू डेवलप दिस फीचर, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू अचीव दैट फीचर। तो वो जो हम्म। डिस्कशन वाला कल्चर था वो नहीं था इन माय प्रीवियस कंपनी विच आई फाउंड इन पेटीएम। तो उससे ग्रो करने में तुम्हें और हेल्प मिलता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है, तुम्हारी लर्निंग और बढ़ती है, क्योंकि 10 लोग हैं हम्म। ग्रुप में सेइंग समथिंग, यू गेट टू नो ओके दीज आर द थिंग्स दैट आर फीजिबल इवेंचुअली। वो एक बहुत बड़ा एज रहता है आई थिंक इन स्टार्टअप्स। इट्स नॉट लाइक कि बस तुम कर दोगे और दे दोगे। देयर गुड टेक कंपनीज विल हैव अ गुड कल्चर वेयर
you can discuss among folks, you can हम्म decide on the basis of that discussion. हम्म। तो इट्स And लाइक कि सब कोलैबोरेटिव हैं बहुत ज्यादा, एंड दे वांट टू डू द बेस्ट थिंग इन मिनिमम टाइम। वो एक right, right, कल्चर है, इफ अ कंपनी इज स्मॉल एंड इट्स वेरी टेक ओरिएंटेड। करेक्ट करेक्ट। और सिंस बहुत छोटी कंपनी थी तो फिर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। यू हैव टू डू समथिंग, इट्स वेरी इजी कि इसके पास जैसे ये बोलना है, ये काम हो जाएगा। हम्म अगर कोई फंसा तो ऐसा नहीं रोमिंग अराउंड कि इससे पूछो उससे पूछो, 50 लोग नहीं है, हर काम के लिए एक ही बंदा है, उसके पास जाओ एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, विच इज हाँ। वेरी बिग प्लस पॉइंट इन स्टार्टअप। तो एक्चुअली यही पूछना चाहता हूँ मैं कि कंपेयर कर, उसके बाद तो माइक्रोसॉफ्ट में गया, तो व्हाट वाज द, इन ओवरऑल हाइंडसाइट क्या डिफरेंस अगर बिग कंपनी में जाओ इंडिया में एंड देन वर्सेस ये जो स्टार्टअप्स है, अभी भी पेटीएम जैसे इक्विवेलेंट स्टार्टअप्स होंगे, तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी, एंड फॉर व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स कि किस में क्या मिलता है जाने से? So, like going to Microsoft, at least in college, it was like a dream. कि okay, मैं हम्म from being from a non-CS background, I'll be working for a big tech like Microsoft. तो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो हाँ, जैसे ही हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी गोइंग देयर। Work culture wise, it's very different from startup. Probably now I can say it is not something for me specifically, because I like that culture where discussion हो रहा है, चीजें जल्दी मूव कर रही हैं, and context development इतना मुश्किल नहीं है। Here there are services which very old, तो उसकी context building में इतना टाइम लग जाता है कि, हम्म और there, for each thing there would be 50 people. Probably you have to do one small thing. For that also you'll need to talk to a lot of people to get that thing done. Because of that, process becomes slow in big tech. हम्म But the kind of scale, like I was working in a service which was serving like 1 trillion requests per day, something like that. So that kind of skill you cannot find anywhere else. And that tech was around 20 years old. And थिंक कि उस टाइम किसी ने ऐसा सोचा था कि आज भी वो स्केल हैंडल कर पा रहा है वो सिस्टम। हम्म। तो ठीक है, अपने आप में वो एग्जिस्टिंग चीजें देखना एंड सीखना अपने आप में बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। बट इन टर्म्स ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट इन बिग टेक। ऐसे बाकी तो इट्स कल्चर वाइज, इन जनरल इट्स रियली गुड। माइक्रोसॉफ्ट एज लाइक तुम्हें हर चीज के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तुम्हें कुछ भी हम्म चाहिए तो there would be people you can talk to, there would be people at every level, तो तुम किसी के पास भी जा सकते हो, बहुत ओपन कल्चर है। तो those kind of things are definitely there in big tech which you might not get in a startup. ओके। तो ऐसा लग रहा है कि बिग टेक में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सपीरियंस था उसमें यू लर्न फ्रॉम वॉचिंग अदर पीपल्स वर्क, क्योंकि उन्होंने बहुत 20 years पहले बहुत बढ़िया सर्विस बनाई हुई है, तो यू कैन रीड एंड कॉन्टेक्ट गेन कर सकते हो। बट द लर्निंग जो है कि खुद से मुझे कुछ बनाना है, तो वो बहुत ही स्लो है एंड इट विल टेक टाइम टू एक्चुअली डू द सेम थिंग जो कहीं और हो जाएगी। तो उसके बाद लेकिन तू फिर उबर गया, तो वो कैसे, इज इट अ स्टार्टअप, इज इट बिग टेक, कैसे फील करता है तो वहाँ पे? It's somewhere in between. It's neither a startup nor a big tech. It has pros of both the world, it has cons of both the world also. अच्छा। But in general, I feel it's a very good place to be, Uber. So, like in terms of startup culture, things moves really fast here. You have clear visibility कि क्या हो रहा है ऊपर। तो तुम हम्म अगर कुछ कर रहे हो, तुम्हें इम्पैक्ट दिखेगा, ओके दिस इज गोइंग टू चेंज दिस थिंग, और आई एम गोइंग टू डू इतनी सेविंग्स, और दिस इज द न्यू फीचर विच आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू विच एक्चुअल पीपल वुड बी यूजिंग, जो चीज हम्म बिग टेक में होता है थोड़ा। एंड in terms of con from startup, again there could work life balance could go for a toss at times, अच्छा। and there is that constant pressure of gaining visibility in big tech. हम्म। So like startup में whatever you are doing, it's a very small company, everybody would know कि तुम क्या कर रहे हो, ये हो गया। क्या फायदा हो रहा है इससे, क्या नुकसान हो रहा है। बिग टेक में ऐसा नहीं है, तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें वो चीज दिखानी भी पड़ती है कि तुमने ये की।
उससे क्या फर्क पड़ा। तो सेम चीज तुम्हें उबर में भी करनी पड़ती है कि अच्छा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम करोगे उसका इम्पैक्ट सबको दिख जाएगा। यू हैव टू डू, यू हैव टू शो ऑल्सो, यू हैव टू हम्म। क्वांटिफाई इम्पैक्ट। और गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स इज नॉट एज इजी एज इन अ स्टार्टअप। तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स के लिए ढूंढना पड़ता है, कई बार तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है कि ठीक है, these are the potential areas which I can work, or these are the things which I can improve, which can make an impact. So हम्म। those kind of things still are there, and I mean, it's bound to happen once you grow in a big org. तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। I don't think any big org would have a nice startup हाँ, culture that it used to have initially. लेकिन ये सब आई थिंक थोड़ा सा कंपोनेंट इसलिए भी है कि नाउ यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाइंड करनी है प्रॉब्लम एंड क्वांटिफाई करना है एंड दिखाना है। लेकिन अगर अगर तुम फ्रेश ग्रेड हो तो तेरे हिसाब से अभी इंडिया में नए स्टार्टअप्स आना चाहिए, या फिर कंपनीज लाइक उबर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या उबर जैसी कंपनीज जो दूसरी होंगी जो बीच में है, इट्स नॉट लाइक लेगेसी कंपनीज बट मोर मॉडर्न। I think as a fresher, I would any day prefer Uber or a startup. I would not be very supportive of going to a big tech initially unless you get to work on a very good project, you have a small team. But working on a service which is 20-year-olds is not something I would advise for a fresher. The reason being कि तुम्हें context building में इतना time लग जाएगा. Let's say you spend 2 years in context building. Till the time you learn, you have lost the opportunity of learning a lot of other more relevant things which will help you grow in your whole career. So you are working on something company specific. So probably I would like to save that time, at least in the initial years. ऐसे तो दैट्स अ गुड पॉइंट, बेसिकली जहाँ पे फास्टर पेस्ड डेवलपमेंट हो, दैट विल बी गुड फॉर करियर एज वेल। Hmm. कूल। Right. अब ये बता, उबर में थोड़ा और जाते हैं कि अगर उबर में जॉब चाहिए तो व्हाट इज द प्रिपरेशन लाइक, कि एज अ सीनियर इंजीनियर किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं एंड व्हाट डज इट टेक टू गेट इनटू उबर? Okay. So interview process is more or less standardized across all the companies, I feel, be it Facebook, Google, Microsoft. So you will have coding rounds, then low level design, high level design. But it's easier said than done, meaning there is a lot of efforts you'll need to put to go to that level. There would be slight differences in coding structure or in interview structure also. Like Google will ask you to do only paper coding. In हम्म। Uber or Amazon, probably they'll ask you to run and execute your code. So those ओके। kind of differences, and actually it makes a lot of difference when you are actually doing it. So suppose you haven't practiced execution of code, and there would हम्म। be a minor mistake. It would be really difficult for you to identify in that short interval of time कि ओके सामने कोड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ में आता है छोटे से टाइम में, अगर तुम वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो पहले से। कोडिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड नाउ देयर आर गुड पोर्टल्स वेयर यू कैन गो say find questions, execute, run, do sample cases, and how to debug without a debug pointer. That is also a skill हम्म। for interview you should have. Then similarly, there are really good resources now for learning design. Like when we started our career, it was difficult to find good resources. हम्म। If we used to rely on books के ठीक है ये बुक राइट। पढ़ ली, इसमें ये वाला एक ब्लॉग पढ़ लिया, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। नाउ इट्स मोर रेडिली अवेलेबल कि एग्जैक्टली तुमको क्या चाहिए इंटरव्यूज के लिए। तो हाँ, दैट कैन बेनिफिट। तो उसमें से देख लेना चाहिए कि जो जो हेल्पफुल दिख रहा है तुम्हें, जो भी अच्छी रिसोर्सेज हैं, जो भी लोग सजेस्ट करते हैं, ट्राई रीडिंग द ट्राई गोइंग थ्रू द यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस। So that actually helps. And considering me being from a non CS background, it was really helpful for me क्योंकि मेरे पास इतना कंटेक्स नहीं था चीज़ों का। इवन एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर की न्यूआंसेस भी मुझे
आफ्टर कमिंग टू जॉब पता चली कि ओके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम्म। प्रोबेबली आज की डेट में मैं तैयारी शुरू करता, इफ आई वुड हैव बीन अ फ्रेशर, मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है कंपनीज की, तो इट वुड हैव बीन अ लिटिल मोर इजियर। अभी लेकिन अभी टॉप रिसोर्सेज क्या है तेरे हिसाब से, अगर इंटरनेट पे, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल है, तो लेट्स से अगर एक महीना है तो व्हाट शुड आई डू एंड फोकस ऑन? सी माय पर्सनल फेवरेट इज लीड कोड फॉर कोडिंग। ओके। तो उसमें लोग बोलते हैं कि 200 क्वेश्चंस कर लिए, 250 कर लिए, व्हाट इज द राइट अमाउंट अकॉर्डिंग टू यू, कि व्हाट इज द, कि अगर इंटरव्यू क्लियर करना इज द गोल, इट्स नॉट कि मुझे पब्लिसाइज करना है कि मैंने इतने कर लिए, तो व्हाट इज द राइट बैलेंस? आई थिंक दैट वुड बी डिपेंड, दैट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन के तुम कितनी जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हो। बट आई फील के इट हैज मीडियम लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन। हम्म। If you can flawlessly do those medium level difficulty questions without creating a bug in between, you are ready to go for interview. ओके। अगर किसी ने बहुत डिफिकल्ट लीड कोड हार्ड तुमसे पूछ लिया, तो इट्स जस्ट योर बैड लक एंड प्रोबेबली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इन रियलिटी 45 मिनट्स में तुम वो क्वेश्चन समझो, उसको कोड करो, इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कैन डू एवरीथिंग। समटाइम इट डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो। But if you can do medium questions flawlessly, I feel you are ready to go for interview. ओके। That's what I aim for if I'm going for an interview. Yeah, सो after दैट्स लाइक द practicing. एल्गोरिथमिक राउंड्स। अब सिस्टम डिजाइन Yeah, में व्हाट that's इज दैट? correct. हम्म। System design में I feel data intensive application is a really good book that अच्छा। everyone should read. मतलब not just job, it will help you in not just with the interview, it will help you in job also. हम्म। Other than that, meaning resources are really scattered for design. There was a blog, some GitHub page I used to read to learn about the differences between SQL and NoSQL database. So it's more like topic oriented. So you identify हम्म। what topics are important. Okay, the difference between databases, which protocol you need to use for network. So those kind of topic you pick and start building information on that. So हम्म। that will help. I don't think there is a one-shot solution for designing. Probably you can go through those YouTube videos which suggest ke how to do designing. Eventually, just before the interviews, it will help you a lot. Ke, okay, how to put your thoughts in the board. So it's important to go through that videos, but that will not give you complete context about what exactly designing is. So for हम्म। that, you'll need to uh, go through multiple resources. ओके, तो इट्स, you get and study the book, so it will give you good depth, and then फिर you identify कि कहाँ पे weak spots हैं तुम्हारे, to go deeper into understanding that, and then जो YouTube videos है, it gives you a good framework कि interview में कैसे lead करना चाहिए, कि how to go Correct. about at the actual interview. Right, right, right. Okay, cool. तो एक और चीज जाननी थी कि स्टार्टअप्स वर्सेस बिग टेक में सैलरी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्योंकि सैलरीज इन स्टार्टअप्स आई वुड एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं वर्सेस बेस पे, तो व्हाट इज रफली लाइक फॉर अ गिवन पोजीशन, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी? So, meaning there would be startup, early stage startups, जो probably तुम्हें ESOPs दे रहे होंगे, हम्म। and there would be some mid-level startups, not startup, they are on the verge of becoming public, but probably for some reasons, maybe profitability or whatever, they are just waiting for some time before they get into IPO. And then there हम्म। are public companies. So public companies में you'll, if you get stocks, they are as good as money. तो उससे कुछ, meaning if they give me base, if they give me stocks, it doesn't matter. I can just, if even if they give me money, I can buy the stocks outside from that same money. हम्म। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. But when it comes to small companies, startups, if they have to compete, it becomes necessary that if they want similar kind of resources, they'll need to shell out that kind of money which big tech are doing. So हम्म। in generally, find base is higher in startups as compared to big techs. हम्म। And so even companies which are on the verge of IPO, they will also be giving more base as compared to big techs. ओके। तो दैट सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा.
but in tech, salary varies a lot. You'll find jobs at every salary range. Meaning in Uber, when I joined, I was not even expecting that people get this kind of salary. It was just a surprise for me, and it was a happy surprise, fortunately. But हाँ, it's better to be aware कि तुम जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ की क्या सैलरी रेंजेस हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है लेवल्स डॉट एफ आई आई ब्लाइंड एंड ऑल दीज पोर्टल्स। हम्म। यू कैन नो के क्या सैलरी रेंजेस है। वहाँ पे जाओ, एटलीस्ट यू आर अवेयर पहले से कि ठीक है, दिस इज व्हाट आई शुड बी एक्सपेक्टिंग। यू कैन नेगोशिएट ऑन दोज नंबर्स। तो ये अब उबर में है, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू कि जैसे आजकल अभी एआई बूम बहुत चल रहा है, एवरीवन वांट्स टू गो टू एआई, तो इज दैट समथिंग ऑन योर माइंड एज वेल कि अगले 5 साल में अगर रेलेवेंट रहना है तो कुछ एआई में करना पड़ेगा, या फिर जो बैकएंड सिस्टम्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, तो वो तो चाहिए ही चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20-30 years? आई थिंक जो सिस्टम्स है वो तो रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जा रहे। बट द थिंग इज के इवन मेंटेनिंग एंड बिल्डिंग दो सिस्टम्स कैन गेट easier with AI. So even if you are not working on anything specific to AI, you should know how to leverage AI to make your job easier. At least वहां पे तुम अप टू डेट हो, पता है सब कुछ के क्या चल रहा है बाहर, हाउ व्हाट आर न्यू थिंग्स कमिंग अप, हाउ दे विल बी यूज्ड। तो वो रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत क्विकली आउट ऑफ डेट हो सकते हैं। एंड हम्म। लेट्स से इफ आई से ओके आई एम नॉट गोइंग टू यूज चैट जीपीटी, it will just make my life difficult, and probably somebody who is using it would be faster than me in doing the हम्म। same things. If I'm not using Copilot, probably ठीक है, I may know some few more syntax, but in general my speed will get lesser in going through the code and working through the code. And especially in the documentation, I can write everything, but if somebody is helping me write that, so why not leverage that? So at least Right. those kind of things, so you should start doing and see, let's where this goes, how relevant it is, how it is shaping the career in software engineering. So with time हम्म। we'll need to adapt. It's not like we can think of कि okay we have to use it or we have to go। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसमें ही जाना है कि ओके मुझे ओपन एआई में ही जाना है, ऐसा कुछ प्लान नहीं। हम्म। हाँ, रेलेवेंट रहना है, उसके लिए जो भी वट एवर इट टेक्स आई विल नीड टू डू, रियली हेल्प्स। फाइनल क्वेश्चन, अगर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, तो व्हाट वुड बी द टॉप थिंग्स यू वुड से टू देम कि ऐसे ऐसे शेप करना चाहिए, एंड व्हाट आर द करंट टॉप कंपनीज टू वर्क फॉर इन इंडिया? So to be successful as a software engineer, definitely working hard doesn't ever goes wrong. So sorry. To be successful in software engineering, hard work is extremely necessary. Like you will have to be up to date. You should have that habit of learning new things, reading new resources. Let's say you get into a problem, there won't be anyone who can help you directly with the solution, okay, who can come and tell you, हम्म। okay, these are the things you need to do. For every problem that I get, it's a new thing. Nobody is can tell me, okay, what exactly I need to do. So I have to figure out. So I'll need to read 10 resources probably. I'll need to figure out on my own क्या क्या करना है तब ये प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व हो। तो वो एक हैबिट है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, वो तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद I think these basic things, coding and designing for interviews, that is very necessary. Though a lot of people don't agree with the process, interviewing process that we have for software engineering, कि नहीं होना हम्म। चाहिए, इससे on job help नहीं मिलती है. But eventually, it is helping you uh, get the best folks. Eventually, it is working हम्म। for companies in that way. तो ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है, एंड अगर ये प्रोसेस हटा दें इट विल बिकम वेरी डोमेन स्पेसिफिक। ओके, कोई ई कॉमर्स में काम कर रहा है फिर ई कॉमर्स में ही करता रहेगा पूरी लाइफ। अभी इट्स वेरी इजियर टू हॉप अराउंड डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स, यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो हम्म। दिस इज आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट इन दैट वे फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो have that skills, learn that skills, doing coding on paper, on portals, and doing design on board, doing LLD.
So those kind of skills you should cultivate. And other than that, I think, yeah, keep your goals, break your goals into smaller goals and try working for each of them one by Hmm. step instead of just thinking, okay, one day I have to do one big thing and just spending 3 4 years on that. Yeah. So problem solving, gaining knowledge continuously, and then project management if you have a big goal, how to break it into multiple pieces, components, so to get to the final solution. तो Yeah. और वही top companies, what do you think? अभी Uber is one, at least in my opinion. Yeah, I feel Airbnb is good. Okay. And definitely, I think Databricks is coming to India. I'm not sure what exactly they're working from India, what profile is there. Amazon is doing really good work in India. So whichever company you are choosing, I would feel very, this is a very important thing. If that company has shared responsibility between India and US, how clear demarcation of responsibility is there. So Okay. what you are doing, if it is yours, that whole team is in India, it would help Hmm. you grow much faster. It will help you do things much faster as compared to share responsibility between India and outside. So that is the problem in big techs which have US counterparts. Okay, in some companies, I saw that, okay, that Hmm. shared responsibility is there. That creates a problem. If that is not there, very क्या good. प्रॉब्लम If होती है, मतलब if there's a US team for the same project, let's say. करेक्ट, तो अगर यूएस टीम होगी सेम प्रोजेक्ट के लिए, तो देयर वुड ऑलवेज बी अ चैलेंज टू गेट द वर्क, फर्स्ट थिंग, टू गेट गुड वर्क। Hmm. क्योंकि तुम्हारे पास सेम काम है एक टीम के पास, उसको तुम्हें दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मोस्टली US teams would be closer to management in Hmm. US. It becomes easier for them to coordinate with them. Probably half of the companies don't have project managers in India. They will only Right. be in US. So if you are in US, you are working for a project which is getting driven from US. तो एक तो तुम्हारा work life balance will go for a toss for sure. Hmm. Second Hmm. thing, even though you are going through all that effort, it's not necessary that you'll get all end-to-end component end to end. Probably you'll get a piece of it, and half piece of it would be getting done from somewhere else. So you will not have that clear understanding, that whole holistic picture of what you are doing. Hmm. So Hmm. in startups, in small startups, you will have that clear picture. Even like Uber has that US teams and India teams, but they have built a culture where whole components either belong to US or they belong to India. So that Okay. way it helps us to say, okay, these are the things which my team is doing, and ठीक है, it really helps. So I would avoid that thing. And every manager in India tries के okay, मेरी टीम है, उसको पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट मिले, उसे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट मिले, बट वो समटाइम्स Hmm. फिजिबल नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं या इन स्टार्टअप डोमेन, इन बिग टेक्स आल्सो, बट हाँ, these are इंडियन few। स्टार्टअप्स कौन से आ रहे हैं, which are upcoming and really good to pursue opportunities in? I'm not तूने सारे very up नेम्स to जो date लिए हैं with वो the। यूएस कंपनीज हैं, एंड उसमें यूएस कंपनीज में अगर इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं या इंडियन टीम्स हैं, एंड टू एंड ओनरशिप, तो वो बेस्ट केस है। बट इंडियन कंपनीज भी आ रही होंगी कुछ, आई होप कि ये अच्छी कंपनीज हैं, एंड दीज आर वेयर द देर आर स्मार्टेस्ट गुड पीपल आर कंपनीज, वर्किंग। पर वही है, मेरा जो स्टार्टअप नॉलेज है वो प्रोबेबली 2 से 3 साल पुराना होगा। तो अच्छा। उस टाइम रेजर पे वाज अ वेरी गुड कंपनी, इट वाज अ ओके। काइंड ऑफ स्टार्टअप। अभी तो ग्रो कर गई है काफी, नॉट श्योर हाउ द कल्चर इज इंटरनली। रूब्रिक इज अ वेरी गुड कंपनी, आई हर्ड। बट रूब्रिक भी आई थिंक यूएस बेस्ड ही है हाँ, शायद। यूएस बेस है, बट हम्म। दे ऑल्सो हैव अ गुड demarcation, I think. But हाँ, eventually हम्म। you will get to know when you actually go in that company or someone in that company. जैसे हम्म। Amazon का sure के उनका सेपरेट होता है
कि जो टीम यूएस में इंडिया में काम कर रही है उसका पूरा काम इंडिया से ही ड्राइव हो रहा होगा, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर भी इंडिया में होगा, उनका मैनेजर भी इंडिया में होगा। तो इसलिए वर्क वाइज इट्स अ रियली गुड कंपनी। ओके, तो कूल। ये तो काफी अच्छे लिस्ट है फॉर समवन who wants to pursue top companies at least in 2024 to go and look forward to, and then do lots of lead code and system design to get into it. And I think eventually ये भी पता चल रहा है कि you can overcome this problem of not doing undergrad in CS. It's basically reading the same things which you actually go in universities to read. CS एक ऐसी branch है which you can actually just gain a degree by just doing online study. मुझे जब मैं कॉलेज जा रहा था मुझे यही लग रहा था सीएस के लिए यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, ये तो सब ऑनलाइन है पढ़ा हुआ। इसमें देयर इज नथिंग फिजिकल टू बी डन, या फिर हाँ। फिजिकल इज अ कंप्यूटर जो कि तुम्हारे पास होता है, तुम कर सकते हो प्रैक्टिस लैब कोर्सेज। बाकी जो ब्रांचेस हैं जैसे लेट्स से मैकेनिकल, उसमें तुम्हें वर्कशॉप जाके कुछ तो करना पड़ेगा विच उसके लिए राइट। यूनिवर्सिटी चाहिए फिजिकली। करेक्ट करेक्ट। सही है, तो दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस पॉडकास्ट। It was very helpful for me in Indian software engineering. Any final thoughts? कुछ भी जो useful हो सकता है, या फिर मेरे लिए कि ये पूछना चाहिए था? No, I've covered most of it, but no matter where you are, what you are doing right now, there is always scope to grow. तो वही है बस, find that right thing which you like and go for it. Eventually, things Nice. will work out. Maybe a bit late than what you thought of initially, but eventually that happens. And in a long run, 6 months, 1 year doesn't matter as such. Yeah, तो ठीक है, have 6 महीने patience. 1 साल में कभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। जस्ट गो गेट वट एवर यू वांट टू डू। cool. चलो फिर बस ओके। यहीं पे बंद करते हैं। रुक, बंद कर दो। So thank you friends for watching this episode. I really hope that you liked it and found it useful. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं about this episode या फिर इस फील्ड के बारे में तो प्लीज कमेंट कीजिए। And if you have friends and family who are looking to pursue their career in this field, तो उनसे के साथ शेयर भी कीजिए। हम ऐसे ही हर हफ्ते वीडियोस लाते रहेंगे of different domains with different guests, and the hope is that you will learn something from these videos. So thank you so much for watching. See you next week.